Good morning to all my dear students. Today in the business studies lecture we will cover another topic, that is distinguish between, which is based on your fourth chapter, that is business services. Okay, we have done with this chapter business services. We have done with basic concepts and another concepts of business services, number of types of business services. Okay, so under it transport related services जो पढ़ा था हमने, उसके अंडर देर इज़ वन क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन. ओके, वंस यू विल डन विद दिस क्वेश्चन, आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस से जो कुछ भी क्वेश्चन होगा तो वो ये पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश में कवर हो जाएगा. ओके, so without wasting time we will start with the distinguish between road transport, rail transport, water transport and air transport. All these four are different modes of transport in transport services. Okay, so first is what? Speed. स्पीड में क्या आता है? रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ लिमिटेड स्पीड ड्यू टू बैड रोड कंडीशन, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा. Okay, in reality you can also see that number of roads are damaged due to monsoon season, okay, or due to rainy season, yes or no, and just because of that there will not be a good speed you can get in that particular transport. So road transport is having limited speed due to bad road conditions and accidents also. Chances of accidents are also there. In case of rail transport, yes, considerable speed is there since it runs on track which rarely gets disturbed. Okay, कभी कभी होता है कि ट्रेन जो है वो पटरी से खिसक गई, yes or no, so there is a considerable speed in case of rail transport. Whereas in case of water transport, it is slowest mode of transport. Why? Because that ship is transporting through water, yes or no, so on the surface of water any object can flow very slowly, yes or no, so there is a slowest speed in water transport. Whereas in air transport, it is the fastest mode out of all transport, yes or no. Why? Because it is air transport. Okay, उनका जो इंजन होता है, that engine is also super power engine. So this is what the speed related distinguish between. Next is carrying capacity. In road transport it has a limited carrying capacity. Okay, why? Because whatever the bulky goods we are having, or we will transport those bulky goods either by using railway, waterway or airway. Okay, so carrying capacity is very less in road transport. In case of rail transport it has a huge carrying capacity. ओके, अगर आपने देखा होगा, मालगाड़ी देखा होगा, सो उसमें बहुत सारे बल्कि गुड्स भी बैठ सकते हैं. ओके, विद अ कंसिडरेबल स्पीड वी कैन कैरी दोज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इन केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इट हैज़ अ वे ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी. ओके, इसको भी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. एंड इन केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इट हैज़ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी. येस और नो? वाई? बिकॉज योर जेट एयरवे इज गोइंग through the air, so there must be a limited capacity should be there. Okay, otherwise वो particular जो jet होगा वो उड़ सकता है क्या आकाश में? नहीं. Okay, so it has limited carrying capacity. Very easy question it is. Now next is, in case of road transport it requires limited capital investment. So ये concept का नाम क्या है? Capital investment. Okay, so capital investment in case of road transport is limited in terms of construction of roads, vehicles and their maintenance. Okay, it requires a less capital. In case of rail transport, the cost of construction of trains, railway tracks is high. Also the maintenance of train tracks and stations is also very high. Why? Because it is heavy vehicle. ट्रेन इज़ वन ऑफ वेरी हेवी व्हीकल एंड ट्रेन के लिए देयर मस्ट बी दैट पर्टिकुलर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर. येस और नो? अगर वही रोड होगा तो रोड पर प्रॉपर इंफ्रा नहीं भी हो तो कोई भी व्हीकल क्या हो सकता है, रोड पर आराम से चल सकता है. बट इन केस ऑफ रेल always requires proper infrastructure and good quality maintenance, so it requires huge capital. In case of
वाटर ट्रांसपोर्ट इट यूजेस वाटरवे, सो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट नेचुरल हाईवे, एंड हेंस देयर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व. Why? Because it is natural highway we are using for waterways. However, there is a high cost involved for the construction of ships and parts, and also the maintenance of ships and their parts. ओके, सो जो हेवी मटेरियल जो कार्गो शिप्स पे जाते हैं सो दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस मेंटेनेंस. एंड वाइल इन केस ऑफ एयरवेज इट रिक्वायर्स व्हाट, इट यूजेस एयरवेज आर नेचुरल, सो हवा में तो कोई कंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं आती. ओके, सो देर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयरवेज, बट ह्यूज कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व. ओके, एंड एयरपोर्ट्स ऑल्सो. ओके, अगर वो हाईवे सॉरी देयर हाईवे इज़ ऑन एयर, सो वहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है. बट वेन एवर if that particular air jet you want to land in a surface of the earth, so it requires availability of airports. सो सच एयरपोर्ट्स को बांधने का, कंस्ट्रक्शंस का जो कुछ भी खर्चा होता है इट इज़ ह्यूज कॉस्ट इनफ. ओके, एंड एट द सेम टाइम एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी फॉर द कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट एयरक्राफ्ट फॉर देयर मेंटेनेंस इट रिक्वायर्स more cost, and at the same time to take off that particular aircraft it requires huge amount of fuel also. Okay, so it has a heavy capital investment requires for what, for air transport. Next is distance. Recommended for short term distance. Which type of? Road type of transport. Road transports are recommended whenever there is a short distance you want to cover. Okay, in case of rail transport recommended for both short and long distance. Okay, yes, of course rail transport hoga, but yes, within country only you can utilize this rail transport for long distance and for short distance also. Okay, whereas in case of water transport suitable for long distance, especially across the countries and continents. Okay, wait, actually it is continents. Okay, it is what does it mean? It is a huge area of land wherein number of countries are situated. So in such case which type of water transport is suitable for long distance? And the last one is what? Air transport. Air transport तो बना ही long distance के लिए है, yes or no? So it is suitable for long distance. Next topic is charges. Transport charges are not fixed due to increased fuel prices. Okay, transport charges are not fixed due to increase or decrease in the fuel charges. Okay, अगर fuel charges बढ़ गए so road transport के charges भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से increased हो जाते हैं. Okay, so it is completely based on the fuel prices. Next is rail transport charges are relatively low and are fixed according to the distance. So distance wise rail transport is more and more convenient for any person. Yes or no? Why? Because ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए it requires very much less charges. Okay, next is for water transport charges are low. Waterways में भी there are low transport charges required, whereas in case of air transport they requires high charges, or the charges charged by air transport is very high. Okay, next is door to door service. ये तो बहुत ही easy है. Who provides door to door service? Only and only road transport. Okay, while in case of rail transport it does not provide door to door service. Then in case of water transport it also does not provide door to door service, and air transport also never provide door to door services. Next is means of transport. It uses animal. In case of road transport uses animals, animal carts, motorcycles, 3 and 4 wheeler. ओके, अगर आप रोड पर देखोगे तो जितने सारे व्हीकल्स है all those vehicles are means of transport for road. Okay, so bicycle, auto rickshaw, bus, animals, animal carts,
etc. So all those are means of transport for road transport. Okay, in case of rail transport, it uses passenger train and goods train. ओके, पैसेंजर ट्रेन होगा तो फिर वो लोकल पैसेंजर ट्रेन होगा, एक्सप्रेस रेलवे होगा, और एल्स देयर विल बी गुड्स ट्रेन जिसको हम मालगाड़ी भी बोलते हैं. ओके, देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर इज व्हाट? वाटर यूजेस बोट, बिग शिप जिसको हम कार्गोज भी बोलते हैं, टैंकर्स, लाइनर्स एक्सेट्रा. एंड whereas in case of air transport, aircraft, helicopters, jets etc. they utilize. ओके, सो जो बड़े बड़े जेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सामान को यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं. सो दे आर यूज टू ट्रांजिट अ बल्की गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, बट अप टू अ लिमिटेड क्वांटिटी ओनली. नाउ नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी. रोड ट्रांसपोर्ट कहाँ पर सूटेबल है? सो इट इज़ सूटेबल फॉर रिमोट एरिया, यस और नो, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा लोग नहीं रहते, देयर इज़ नो एनी डेवलपमेंट. सो इन दैट केस वहाँ पर तक पहुँचने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज़ सूटेबल. ओके, बट सी व्हाट द एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन. सी, it is road transport is suitable for the transporting the goods in relatively smaller quantities for short distance. Okay, so here they have covered the topic regarding the quantity of goods. So quantity of goods कितना होगा? So कौन सा transportation is very suitable? So relatively smaller quantity के लिए there is a road transport is available for a short distance. Okay, smaller quantity with short distance you can choose for, or you may go for road transport. Okay, whereas in case of rail transport, it is suitable for transporting heavy goods in large quantity over a long distance. ओके, जो हेवी गुड्स होते हैं सो वो हेवी गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड एट द सेम टाइम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए यू कैन गो फॉर रेल ट्रांसपोर्ट. whereas in case of water transport it is suitable for transporting way heavy goods machineries in the large quantities to any part of the world. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस तो रेलवे ने भी कवर किया है, बट रेलवे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रेलवे to transport the goods from one country to another country. So such a heavy material with a long distance you can go with waterways. And for airways it is suitable for transporting lightweight, perishable and valuable goods to any part of the world. Okay, if the goods are perishable in nature, so by waterway it is time consuming in nature, yes or no? So simply you may go for airways. So with limited time, a perishable item also and at the same time valuable goods also you can transport. Okay, from one part of the world to the another part of the world. That is what, from one country to another country. This is what suitability. Okay, next is safety. Road transport में safety, there is a limited safety of goods from sun, rain, wind etc. Okay, so it provides limited safety from in case of road transport. In case of rail transport, goods are kept in locked wagons which provides protection against sun, wind, rain etc. ओके, गुड्स तो ऐसे खुले में नहीं रहते या फिर किसी के पर्टिकुलर मटेरियल से रैप भी नहीं किए रहते. एक्चुअली वो गुड्स कहाँ पर रहते हैं? इट इज़ लॉक्ड इन वैगन्स. ओके, सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट पर्टिकुलर गुड्स कैन गेट इन केस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. In case of water transport, goods are safe as they are specially packed. Okay, so here also safety measures are already taken. Okay, and in case of air transport, goods are safe as they are specially packed. Here also the same thing is happen. Okay, so basically limited safety कहाँ पर है? In case of road transport only. Moving towards next, accidents. Okay, in case of road transport the chances of accidents are more due to poor road conditions and negligent drivers. Okay, if अगर हमारा ड्राइवर अच्छे से गाड़ी चल रहा है बट नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी ठीक से चला रहा हो. ओके, सो जस्ट ड्यू टू दिस number of hurdles road transport are risky enough. There is not proper condition of, there is no any proper condition of roads are available, proper construction नहीं होता, proper infra नहीं होता etc.
Accidents in case of rail transport, chances of accidents are less because of one way track and good signal systems. ओके, एक ट्रैक पर एक ही ट्रेन एट अ टाइम चलती है. ओके, उसके बाद वही ट्रैक पर सेम ट्रेन उसके जैसी दूसरी ट्रेन कब आएगी, बाद में आएगी, कुछ मिनटों के बाद. ओके, सो देयर इज़ अ प्रॉपर सिग्नल सिस्टम ऑल्सो दे आर हैविंग. ओके, सो chances of accidents are very less in case of rail transport. Then in case of waterways also there is a less chances of accidents. Okay, and while in case of air transport chances of accidents are less because of maintenance and expert pilots. Okay, so maximum chances कहाँ पर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट पे. इन केस ऑफ ओनरशिप, ownership is in the hands of private parties as well as government in case of road transport. Okay, because हमारे जैसे प्राइवेट लोग भी क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं. ओके, by having permission of license. Okay, by getting that license, and at the same time government also provides services of transport. Okay, so simply public transport से भी we can use this road area. Then next is rail transport. Ownership is completely in the hands of government only. Okay, railway sector जो है it is not privatized in nature. Okay, it is completely government sector. Next is in case of water transport, it is owned by both private sector as well as public sector. Okay, क्योंकि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, नॉट नेसेसरी ऑल दो शिप्स आर ओन बाय गवर्नमेंट ओनली. ओके, प्राइवेट पार्टीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द केस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वेर एज इन केस ऑफ air transport the same thing is happen. Okay, both the private as well as public sector is available. Now moving towards next is, okay, so this was the last topic of ownership. Okay, I hope you have understood all types of road, rail and water and air transport. Okay, just make the note of this question in your notebook. Okay, from exam point of view this question is also important, most expected question hai ye. Okay, so here we are done for the day. Thank you.